ओके। सो एंगुलर में हमारे पास दो टाइप के फॉर्म है, एक तो टेम्पलेट और दूसरा है रिएक्टिव। टेम्पलेट मतलब जहाँ पे अपन फॉर्म में डेटा जब बाइंड करते हैं वेरिएबल का यूजिंग एनजी मॉडल, सो दैट इज नथिंग बट आवर टेम्पलेट फॉर्म। अब रिएक्टिव में थोड़ा सा सब कुछ अलग होता है। ओके। तो मैं भी एपीआई फोल्डर में एक और कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, एनजी जनरेट कंपोनेंट कार रिएक्टिव बोलता हूँ। सेम कार का ही अपन करेंगे, बस अब वो सेम चीज़ जो हमने टेम्पलेट में की थी वो सेम चीज़ अभी मुझे रिएक्टिव के साथ करनी है। सो कंपोनेंट क्रिएट किया, उसके बाद राउटिंग क्रिएट करना है। ये बाय डिफॉल्ट अब सबको याद हो गया होगा, कंपोनेंट क्रिएट करो, राउट क्रिएट करो, नेविगेशन में डालो, राइट। यस सर। रिएक्टिव कार रिएक्टिव, क्या नाम दिया अपन ने, कार। सजेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, इंपोर्ट ऐड किया, उसके बाद नेविगेशन में ऐड करना पड़ेगा। और हाँ, अभी इस सेशन के बाद भी 8:30 बजे एक सेशन है, 8:30 के बाद 9 वाला प्रोजेक्ट वाला, तो मीन वाइल डिनर करके जूम में ही रहना है, सब कंसिडर करके चलो। ओके, जितना समझेगा उतना। क्या नाम दिया अपन ने, कार रिएक्टिव। प्रोजेक्ट का मिस मत करना, क्योंकि प्रोजेक्ट में ना मैं पूरा क्रड ऑपरेशन कैसे कैसे करते, क्या क्या करना पड़ता है, वो सब बताने वाला हूँ प्रॉपरली। 9 बजे जो सेशन रहेगा वो। ओके, तो वो बिल्कुल मिस मत करना। एपीआई कहाँ से यूज कर रहे थे अपन? जी रेस्यूम। बहुत एपीआई हो गए, क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है। अब ये वाली जो अपनी पे थी, मुझे कार क्रिएट करना है, कार का पूरा अपडेट क्रड क्रड ऑपरेशन करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करते हैं, अपन ऑब्जेक्ट देखते हैं, राइट। तो ऑब्जेक्ट देखो, ये अपना ऑब्जेक्ट है। अब टेम्पलेट फॉर्म में क्या करते थे, ये ऑब्जेक्ट एज इट इज उठाते थे और अपन एक वेरिएबल में स्टोर कर देते थे, और वही ऑब्जेक्ट और वही प्रॉपर्टीज अपन फॉर्म में बाइंड करते थे, राइट। बट अब रिएक्टिव में पूरी चीजें अलग है, ठीक है। अब रिएक्टिव में सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, फॉर्म कंट्रोल क्रिएट करना, मतलब फॉर्म जो अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे टेम्पलेट में, बट रिएक्टिव में क्या है, मुझे फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है। अब मुझे रिएक्ट अगर एनजी मॉडल यूज करना है तो सब क्या, कौन सा मॉडल इंपोर्ट करते हैं अपन? एनजी मॉडल अगर मुझे यूज करना है तो कौन सा फॉर्म मॉडल यूज मॉडल। कर? फॉर्म्स फॉर्म मॉडल। फॉर्म मॉडल। मॉडल। करेक्ट। सो वैसे ही अगर मुझे रिएक्टिव फॉर्म यूज करना है तो मेरे ऐप मॉड्यूल में रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल चाहिए। ओके, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, ठीक है। एनजी टेम्पलेट के लिए फॉर्म मॉड्यूल, और रिएक्टिव अगर फॉर्म यूज कर रहे हैं तो रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मुझे अभी फॉर्म क्रिएट करना है, रिएक्टिव फॉर्म। सो अपने फॉर्म ऑब्वियसली कार का है, तो लेट्स से कार फॉर्म इक्वल टू, इस वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा जाने वाला है, रिएक्टिव फॉर्म का। सो न्यू फॉर्म ग्रुप लिखना है। ये देखो, जैसे ही फॉर्म ग्रुप, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ऊपर इंपोर्ट ऑटोमेटिकली आ चुका है, ठीक है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट और उसके अंदर करली ब्रैकेट। सो ये मेरा रिएक्टिव का फॉर्म है। ओके। अब फॉर्म के अंदर मुझे कंट्रोल क्रिएट करना है। कंट्रोल मीन नथिंग बट जो जो प्रॉपर्टीज अपने को भेजना है वो, मतलब जैसे अपन टेम्पलेट फॉर्म में देखो, टेम्पलेट फॉर्म में अपन ने क्या किया था, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था नॉर्मल वेरिएबल में, वही सेम चीज कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वे ऑफ राइटिंग अलग है। ये टेम्पलेट फॉर्म में अपन ने ऐसे किए थे, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे। अब यहाँ पे अपने को फॉर्म क्रिएट करना है, और ये जो प्रॉपर्टीज के नाम थे ना, इनको नथिंग बट अपन कंट्रोल बोलेंगे। सो ये नाम एज इट इज, जो भी अपने प्रॉपर्टी का नाम है वो एज इट इज रखना है, कोलन
फॉर्म ग्रुप के अंदर अपना रहता है फॉर्म कंट्रोल, सो न्यू फॉर्म कंट्रोल राउंड ब्रैकेट। अब देखो, जब अपन प्रॉपर्टी इनिशियलाइज कर रहे थे तो यहीं पे वैल्यू दे रहे थे, तो यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी इनिशियलाइज करना है कुछ वैल्यू, कंट्रोल की वैल्यू, ओके, यहाँ पे अपन इसको क्या बोलते थे, प्रॉपर्टी या फिर फील्ड बोलो, लेकिन रिएक्टिव फॉर्म के अंदर इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल। सो कार आईडी को कुछ डिफॉल्ट वैल्यू देना है तो इसके अंदर देना है, ओके। कॉमा, एक प्रॉपर्टी हो गई, फिर दूसरे प्रॉपर्टी अपना ब्रांड कोलन न्यू फॉर्म कंट्रोल राउंड ब्रैकेट। अब ब्रांड क्या था, मेरा स्ट्रिंग था, तो मुझे एम्प्टी से इनिशियलाइज करना है, सो डबल कोट। ऐसे ही जितने अपने को एपीआई कॉल में, पोस्ट एपीआई कॉल को जितने प्रॉपर्टीज भेजना है, वो सेम प्रॉपर्टी के नाम के अपन अपने यहाँ पे कंट्रोल बनाते हैं। सो मॉडल न्यू फॉर्म कंट्रोल राउंड ब्रैकेट डबल कोट कॉमा ईयर। ठीक है। रिएक्टिव फॉर्म में बहुत कोड लिखना पड़ता है, टेम्पलेट फॉर्म में कम से कम कोड में अपना काम हो जाता है, लेकिन रिएक्टिव में बहुत कोड लिखना पड़ता है, डॉट टीएस में। और क्या है, डेली रेट है, न्यू फॉर्म कंट्रोल, इसको एम्प्टी करते, एम्प्टी करो या फिर जीरो करो, जो भी करना है, कार इमेज कोलन न्यू फॉर्म कंट्रोल राउंड ब्रैकेट एम्प्टी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके। मतलब अपना हम जो भी कंपोनेंट का अपन कलर ऑपरेशन कर रहे हैं, पहले उसकी पोस्ट पे देखो क्या ऑब्जेक्ट चाहिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, कीज वैल्यू है, जो मेरी कीज है उसी का, नथिंग बट ये कीज है, ओके। ये अपन टेम्पलेट में ऐसा डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लिखते थे, लेकिन यहाँ पे अपने को ऐसा फॉर्म बनाना है। क्लियर है। रिएक्टिव फॉर्म के लिए सबसे पहले अपने को ऐप मॉड्यूल में रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, उसके बाद कंपोनेंट में अपने को ऐसा फॉर्म बनाना है, कार फॉर्म, उसके अंदर न्यू फॉर्म ग्रुप, और फॉर्म ग्रुप के अपन ने फॉर्म का ग्रुप कर रहे, और ग्रुप के अंदर एक एक कंट्रोल, ओके। सो ये ऐसा कंसिडर करो कि ये ग्रुप बना रहे अपन, ग्रुप काय का बना रहे, फॉर्म कंट्रोल का, फिलहाल के लिए। कुछ दिनों बाद तुमको आदत हो जाती है तो प्रॉपरली समझ में आता है, लेकिन पहला दिन है तो ये याद रखो कि अपन फॉर्म कंट्रोल का ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। तो अपन ने पहले ऑब्जेक्ट बनाया कार फॉर्म, फॉर्म ग्रुप बनाया, फॉर्म ग्रुप के अंदर अपना क्या आ जाता है, फॉर्म कंट्रोल, डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे अपन सेट करते हैं, ओके। सो ये अपन ने फॉर्म क्रिएट किए। अभी एचटीएमएल लगेगा अपने को, तो मैं एचटीएमएल यही का ले लेता हूँ, टेम्पलेट फॉर्म का ही एचटीएमएल उठा रहा हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे अपन ने एनजी मॉडल यूज़ किया था वो रिमूव करना पड़ेगा। नेम प्रॉपर्टी मैंडेटरी नहीं रहती है एनजी अपने रिएक्टिव फॉर्म में, सिर्फ नेम प्रॉपर्टी टेम्पलेट फॉर्म में कब मैंडेटरी होती है, नेम प्रॉपर्टी टेम्पलेट फॉर्म में कब मैंडेटरी होती है, बताओ। जब, इफ वी आर यूजिंग एनजी जब मॉडल विद इन फॉर्म अ फॉर्म टैग, ओके। अगर हम एनजी मॉडल फॉर्म टैग के अंदर यूज कर रहे हैं तो नेम प्रॉपर्टी मैंडेटरी होती है, ठीक है। वैलिडेशन भी अपन यहाँ पे नहीं लगाते, वो कल बताऊंगा मैं वैलिडेशन, पहले बेसिक फॉर्म देखते हैं। ठीक है, ये सब हटा देते हैं, अपना सादा एचटीएमएल का फॉर्म है अभी अपने पास। ठीक है, रिएक्टिव अगर क्लिक किया तो ये देखो, ये सादा फॉर्म है मेरे पास। अब सिंपल एचटीएमएल का फॉर्म है, राइट। अब इसमें टेम्पलेट फॉर्म में अपन, टेम्पलेट फॉर्म में अपन क्या करते थे, ऑब्जेक्ट बनाते थे, उसके बाद अपन जितने भी मेरे इनपुट एलिमेंट है उनको क्या करते थे, एनजी मॉडल से वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के साथ बाइंड करते थे, राइट। बट रिएक्टिव में क्या करना पड़ता है, अपन ने पहले क्या किया, अपना रिएक्टिव फॉर्म बनाया, राइट। तो ये जो आपका फॉर्म नेम है, इसको आपको फॉर्म के साथ बाइंड करना पड़ता है यहाँ पे, ओके। रिएक्टिव फॉर्म में फॉर्म ऑप्शनल है, बट मैंडेटरी जैसा यूज करते जाओ, ओके। मतलब ये फॉर्म टैग ऑप्शनल है, बट एक आदत डालो कि मैंडेटरी ही समझ के चलो, ओके। तो ये जो आपका फॉर्म टैग है, इसके ऊपर आपको फॉर्म ग्रुप अपन, मतलब ये जो आपने
फॉर्म बनाया ना, कार फॉर्म, ये फॉर्म आपके इस फॉर्म टैग को बाइंड करना है। कैसे करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है फॉर्म ग्रुप इक्वल टू, और यहाँ पे क्या भेजना है? आपके फॉर्म का नाम, दैट इज कार फॉर्म। ठीक है। क्या क्या किया अपन ने? ऐप मॉड्यूल में फॉर्म, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट किया। उसके बाद कंपोनेंट के डॉट टीएस में अपन ने फॉर्म बनाया, और ये जो फॉर्म बनाया इसका नाम अपन ने कहाँ पे दिया? फॉर्म टैग के ऊपर, फॉर्म ग्रुप को। ओके। उसके बाद जितने अपने इनपुट इनपुट एलिमेंट है, जहां जहां पे अपन एनजी मॉडल बाइंड कर रहे थे ना, अब एनजी मॉडल की जगह हमें लिखना है फॉर्म कंट्रोल नेम इक्वल टू। अब यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल का नाम जाएगा। देखो प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कंट्रोल का नाम चाहिए इसको, तो कंट्रोल का नाम डायरेक्टली ब्रांड, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या पहला, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे कार फॉर्म डॉट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपन ने फॉर्म बता दिया ना, तो उसमें से सिर्फ ये कंट्रोल, तो ये क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन नाम का कंट्रोल इस फॉर्म में है क्या, नहीं, ये चेक करता है। अभी है अपने पास तो एरर नहीं देगा। ठीक है। अब मैं ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखो कॉपी पेस्ट करने का भी तरीका, हर जगह पे अपना फॉर्म कंट्रोल है, तो इसको मैंने कॉपी किया। इसको रिप्लेस किससे करना है? इससे। ये सर्च हुआ, रिप्लेस, सर्च एंड रिप्लेस नहीं क्या? यहाँ पे एम्प्टी कर देता हूँ मैं। अब जहां जहां पे फॉर्म कंट्रोल है वहां पे क्या होगा? इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे डबल हो जाएगा, तो ये निकाल देते हैं। देखो अब अपने को क्या करना है? सिर्फ प्रॉपर्टी नेम कॉपी पेस्ट करना है। तो ऐसी अपनी डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ती है, कम से कम टाइम में अपन ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ब्रांड नेम यहाँ पे जाएगा, जहां जहां पे अपन एनजी मॉडल यूज कर रहे थे ना, उसके जगह पे अपने को क्या करना है? अपने कंट्रोल का नाम, नथिंग बट वही है। वहां पे ऑब्जेक्ट डॉट कर रहे थे, यहाँ पे डॉट के बाद जो है ना वही लिखना है। मॉडल हो गया, ईयर हो गया, कलर, उसके बाद डेली रेट। नेम प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, रहा तो भी कुछ होता नहीं है, लेकिन जरूरत ही नहीं है। कार इमेज, दैट्स इट, हो गया। ठीक है। सो देखो, हमने फॉर्म क्रिएट किया। फॉर्म के अंदर ये कंट्रोल का नाम कहाँ से मिलेगा? जो भी आपके पोस्ट एपीआई में जो भी आपका ऑब्जेक्ट के नाम है ना, फील्ड के नाम, वही। ओके, खुद से नहीं लेना ये। जो भी आपके पोस्ट एपीआई को डेटा चाहिए ना, नथिंग बट प्रॉपर्टीज, वही यहाँ पे रखना है। ओके। फिर ये फॉर्म अपन ने क्या किया? ये जो कार फॉर्म है, फॉर्म का नाम अपने, वो अपन ने कहाँ पे बाइंड किया? फॉर्म टैग पे, इंक्लूडिंग इन स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म ग्रुप। मतलब इसको क्या बोलते हैं? ये क्या किया अपन ने? इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में कब लिखते हैं अपन? प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग है। ठीक है। हमने क्या किया? फॉर्म का एक प्रॉपर्टी होता है फॉर्म ग्रुप, उसको हमने अपने फॉर्म का नाम दे दिया। ओके। उसके बाद जहां जितने अपने इनपुट एलिमेंट है, जहां पे अपन एनजी मॉडल यूज करते हैं, उसके जगह क्या यूज करना है? फॉर्म कंट्रोलर नेम, सी कैपिटल एन कैपिटल, और यहाँ पे अपने कंट्रोल का नाम देना है, मतलब जो लेफ्ट साइड में वैल्यू है ना तुम्हारी, वो देना है। ठीक है। अब अपन सेव बटन लिखते हैं, ऑन सेव कार। ठीक है, ये फंक्शन क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अपने को एपीआई को क्या सेंड करना है? पोस्ट एपीआई को क्या चाहिए? पोस्ट एपीआई के साथ क्या भेजते हैं अपन? ऑब्जेक्ट ना। एपीआई को क्या चाहिए? सेव करते समय ऑब्जेक्ट ही भेजते हैं ना, यूआरएल के साथ ऑब्जेक्ट, बराबर। बट अपने पास यहाँ पे तो कहीं पे ऑब्जेक्ट नहीं, अपने पास फॉर्म है। बट एपीआई को जब हिट करेंगे तब मुझे क्या करना है? फॉर्म का पूरा ऑब्जेक्ट भेजना है ना, कार का। तो वो अभी ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है वो देखते हैं। सो फॉर्म वैल्यू वेरिएबल बना रहा हूँ, लोकल वेरिएबल, दिस डॉट आपके फॉर्म का नाम कार फॉर्म डॉट वैल्यू। ठीक है। यहाँ पे मैं भी डिबगर लगाता हूँ। ठीक है। कुछ डेटा डालता हूँ मैं। अभी एपीआई कॉल लिखा नहीं है अपन ने, ठीक है। सिर्फ बटन के क्लिक पे डेटा कैसा आता है वो दिखाना है मेरे को। अभी अगर मैंने सेव पे क्लिक किया, फंक्शन कॉल हुआ। अब देखो कार फॉर्म को वैल्यू, कार फॉर्म, यहाँ पे अगर ऑवर किया तो देखो बहुत कुछ मिल रहा है। उसमें देखो वैल्यू मिला। कार फॉर्म डॉट वैल्यू में क्या है? ऑब्जेक्ट मिला। टेम्पलेट फॉर्म में जैसा अपने यस को ऑब्जेक्ट मिल रहा था, तो टेम्पलेट फॉर्म दिखाता हूँ मैं।
ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा डालता हूँ मैं। सेव वाला फंक्शन अपना किधर गया? हाँ। अब ये ऑब्जेक्ट देखो, जैसा अपना टेम्पलेट में क्या हो रहा था, नंबर अलाउड। क्या हुआ और क्या था? वेट कैरेक्टर। सेव पे क्लिक किया। ठीक है, देखो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट मिल रहा था, टेम्पलेट फॉर्म पे है अपन। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट मिला है। ठीक है, सेम चीज रिएक्टिव में देखो। देखो, सेम ऑब्जेक्ट मिला, जिस जिस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू डाली वो बराबर ऑब्जेक्ट में उसी में गई। ईयर में ईयर गया, रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन। अब अपने को ऑब्जेक्ट मिल गया, फिर एपीआई कॉल का कोड एज इट इज है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। सो रिएक्टिव फॉर्म के लिए अपने को ऐसा पहले फॉर्म बनाना पड़ता है। फिर ये फॉर्म अपन एखादी फॉर्म टैग के ऊपर ऐसा बाइंड करते हैं। फिर जहां जहां पे अपन एनजी मॉडल यूज कर रहे थे वहां पे क्या यूज करेंगे? फॉर्म कंट्रोलर नेम। और उसको क्या चाहिए? जो लेफ्ट साइड में आप कंट्रोल के नाम दे रहे हो ना वो। ओके। मैंने सिर्फ कार आईडी बाइंड नहीं किया क्योंकि कार आईडी अपनी प्राइमरी की है। ओके। पर बाकी चीजें पूरी बाइंड की है। एपीआई कॉल कर लेते हैं अपना कंस्ट्रक्टर। प्राइवेट http:// क्लाइंट। ठीक है, सो दिस डॉट http डॉट पोस्ट। पोस्ट को क्या चाहिए? अपनी पोस्ट वाली यूआरएल चाहिए। इस कंपोनेंट से ले लेते हैं अपनी यूआरएल। ये यूआरएल इतनी है। उसके बाद क्रिएट कर। ठीक है, ये मेरी यूआरएल हो गई। उसके बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अपने को क्या पे मिला? ये फॉर्म वैल्यू में अपन ने लोकल वेरिएबल बनाया। उसके बाद डॉट सब्सक्राइब, बाकी सब चीजें सेम है। उसमें कुछ भी चेंज नहीं है एपीआई कॉल से लेकर। यहाँ पे डिबगर लगा देता हूँ। ठीक है, अभी पहले देख लेते कि कितने रिकॉर्ड है, उसके बाद अपन ऐड करके देखते हैं। कार्स, यहाँ पे इमेज आएंगे। ठीक है, 11 रिकॉर्ड है अपने पास गेट ऑल कार में। अभी नया रिकॉर्ड क्रिएट करके देखते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर है MH4455। ब्रांड मारुति। मॉडल सेलेरियो। ईयर 2023। रेड, डेली रेट 3300। कार इमेज समथिंग कुछ तो भी डाल रहा हूँ। ठीक है, अभी अगर मैंने सेव पे क्लिक किया, अपना फंक्शन कॉल हुआ। और इसमें लोकल वेरिएबल में अपने को पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया। देखो, कार आईडी और जो जो डेटा जो जो फील्ड में डाला वो। फिर अपना एपीआई कॉल कंटिन्यू। देखो रिजल्ट में ट्रू आया, मतलब एपीआई कॉल सक्सेस हो गया। कंटिन्यू करते हैं। अब दूसरे पेज में जाके चेक करते कि डेटा आया कि नहीं मारुति वाला। देखो आया मारुति सेलेरियो 2023 रेड। ये समझा? बाकी सब चीजें सेम है। एपीआई कॉल, एपीआई कॉल के कोड में डजंट मैटर वो रिएक्टिव है या फिर टेम्पलेट है, एपीआई कॉल का कोड वैसा ही रहेगा। सिर्फ फॉर्म को बाइंड करने वाला जो तरीका था उसमें सिर्फ अपना चेंज है। टेम्पलेट में अपन ऑब्जेक्ट बनाते थे, और वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी नेम एनजी मॉडल को बाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पे अपन क्या करते हैं? डॉट टीएस में फॉर्म बनाया। और ये फॉर्म मैंने यहाँ पे एक एक करके पहले तो फॉर्म ग्रुप पे बाइंड किया रहा हूँ। फिर हर एक टेक्स्ट बॉक्स पे अपना फॉर्म कंट्रोलर नेम और अपने कंट्रोल का नाम भेजो। और जब भी सेव कर रहे हो तो अपने को फॉर्म का वैल्यू चाहिए, क्योंकि एपीआई को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। फॉर्म थोड़ी भेजेंगे ना। अपने को एपीआई कॉल को क्या भेजना है? ऑब्जेक्ट। सो फॉर्म की वैल्यू उठाओ। तो ये पूरे फॉर्म की वैल्यू प्रॉपरली जैसा अपना ऑब्जेक्ट है ना, इसके अकॉर्डिंगली प्रॉपरली डेटा बन जाता है। वो एपीआई को भेज दो। एपीआई कॉल के कोड में कुछ भी चेंज नहीं है। समझे? डाउट है किसी को रिएक्टिव फॉर्म? ये बहुत बेसिक देखा अपन ने। वैलिडेशन ये सब अभी धीरे धीरे देखेंगे, कल वैलिडेशन देखेंगे। किसी को कुछ डाउट है?
नो सर। ठीक है, और ये करके देखना, रिएक्टिव फॉर्म सही में हार्ड है और यही ज्यादा यूज होता है। सो ये लिखने की आदत डालो। ओके। ओके सर। ठीक है, और डिफरेंस याद रखो कि टेम्पलेट में कोड ज्यादा कहाँ पे था, टेम्पलेट फॉर्म में ज्यादा कोड कहाँ पे था। रिएक्टिव में सर। हाँ, रिएक्टिव में ज्यादा है, लेकिन टेम्पलेट और रिएक्टिव में अपन ने कंपैरिजन किया तो ज्यादा कोड किधर लिखना पड़ा। टीएस में लिखना पड़ा सर उसके। टीएस में ज्यादा कोड लिखना पड़ा, रिएक्टिव राइट। के। क्योंकि अपना यस सर। कार नॉर्मल टेम्पलेट में क्या था, ऑब्जेक्ट था, ये देखो ना यहाँ पे न्यू फॉर्म ग्रुप न्यू कंट्रोल, ये अननेसेसरी लिखना पड़ा बहुत कुछ। ओके। एचटीएमएल में लगे तो वैसा की वैसा ही, ये एक्स्ट्रा चीज हो गई। टेम्पलेट में अपन फॉर्म ग्रुप पे कुछ नहीं डालते थे, राइट। यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल की जगह एनजी मॉडल लिखते थे, राइट। अब वैलिडेशन देखोगे तो फिर पता चलेगा, वैलिडेशन अपन एचटीएमएल में नहीं लिखते, जहाँ पे कंट्रोल बना रहे ना वहीं पे अपन वैलिडेशन लगाते हैं। ओके। सो कल अपन ये वैलिडेशन देख लेंगे। ओके। ओके सर। ठीक है, तो ये जो अपना कार वाला था, कार का, और उसके बाद जो कस्टमर वाला था, तो दोनों कंपोनेंट आप नया क्रिएट करो और वहां पे सिर्फ क्रिएट करके देखो। रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट करो और एपीआई कॉल को बराबर डेटा जा रहा है कि नहीं, ये चेक करो। ओके। ओके सर। चलो ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लो। मैं मीटिंग शेयर करता हूँ, उसमें ज्वाइन करना, एडवांस टॉपिक कोई ना कोई देखेंगे आज। ठीक है। ओके सर। थैंक यू ऑल। Discussed interceptor. ओके, फाइन। So now we have to see subject and subject behavior. How, what are the scenarios where we have to go for the subject and subject behavior? Okay. All the use cases and how do we create the subject? How do we subscribe? How do we emit the value? Everything. Fine. Now, so I don't know, like those who are working, they have seen this scenario or not. Or first now, let's go with very basic one. I don't want to confuse because subject is very hard to understand. What I will do, let me just remove some links. Okay, so what I will do, I have a nav bar. In app component, we have something nav bar, right? So what I will do, in nav bar, I will have two buttons. In normal application, we get to that theme change, na? Dark theme, normal theme, like that. Okay, so over here, let's create two buttons over in li tag. One button, two button. First, we did, let's say dark mode, normal mode. Okay. So in the navbar, we have two button, dark mode and the normal mode. So at a time, only one button should be visible. So that we will again do the code. Let's add a SM class. Okay. So now in my navbar component, because this navbar is coming from my app component. See, this is app component. If I change some value, okay, whatever the current activated mode is there, whenever I visit any page, I need to get that value. Like what is the current activated mode? Is it a dark mode or the normal mode? Okay. Now just see the hierarchy of the component. So this is our app component. Okay. Now in app component, we have, what do we say, router outlet. So in router outlet, whatever the activated route is there, that will be loaded. Okay. So activated component. Now, how do we pass the data from app component to wherever we have the activated route? So in app component, I'm going to get the value like dark or normal something. Now, whatever the value I have in this variable in app component, how do I pass that data to whatever the component is currently active? Either it can be a user component or pipe component, any component which is active currently. I want to pass the data, like what is the current mode? How we can pass the data from app component instead of subject or something?
How do we pass the data without using subject and behavior? How can we? Business Hmm? services. Services is one way. One more. Intercommunication. Hmm? Parent child. At the rate in There is no parent-child relationship. See, how do we say parent-child? Is this parent-child relationship? Can you see the selector of any component over here? No, no. See, let's say in component, we have this employee list, or let's use pipe. In pipe component, if I render, let's say ng class component or ng class component. So now pipe is my parent component and ng class is my child component. So here we can say we have parent-child relationship, correct? But can we say that same thing in app component? Do we have parent-child relationship over here? No. Because we don't have any component selector. What we have is just link. And in router outlet, whatever the current activated route is activated, that component is going to be loaded dynamically. So this is not parent-child relationship. So one way is like we can pass the data by using service. Another way, Router link parents. but yeah, that also is possible. Means whenever we are navigating, a query parameter will be there and we can pass the data. One more way is there. We can store the data, say, where is our application? Once I click on dark mode, I will use local storage or session storage and I will store that data over there. Now tell me how we will receive that data. Once I click on this button, either I click on dark mode, either local storage or session storage, I will store that data. Now, if I want that data in any activated component, how to read? In constructor or in ng on it, you can read that data. Get Right, na? item. By reading the local storage data, we can read that data. Got it? Okay, sir. See, first you need to understand why do we need subject? If we don't use subject, what are the possible ways? So these are the possible ways. Either you can store the data in service, you will create a variable and there you will store the data. And in every component on the constructor, you will service object will be there also. You will read that variable data, right? Otherwise, on click of this button, you will store the data in local storage or session storage. And whenever component load in ng on it or constructor, you will read the data. You will get it, correct? On the page load, you will get it. Let's say I'm in the pipe component and by default dark is there. So I'm on the page load, I have read that. But let's say if I change it again, then I won't get the data because my code is at in constructor or ng on it. That constructor and ng on it will get a trigger only on the page load. Okay. So if dynamically after the page load, if I'm changing the data, there is no another possible ways by which we can read the data. Current data means actual data we cannot read. Whatever the data we have got while initialization, that only we will get. After that, if someone change it, I won't be getting that data. With service also, we cannot do that. And with local storage, session storage also, we cannot get the updated data real time. Here comes the subject. Okay. First, you understood why we cannot read the actual means after component load. If I change the dark mode to normal mode, I cannot get the data. You understood why we cannot get that data? Because how you will know, na? Because these buttons are in your app component. And how you will know in pipe component that button got clicked or not? Is there any way that we can know like from dark or mode change or something happened in app component? Because there is no relation between app component and the pipe component. How you will get to know? Like something change in app component and I need to check the latest value from local storage or session storage or from the service also. Can we know? One more example I will give you. See. In app component, let's say we have render one component and over here second component. Here we will call it as user component and here we will call it as employee component. Let's say some value got changed in user component. How employee component will know that user component in some variable value got changed? There is no possible way, na? Because these two are a different component.
So if we are changing something in user component, employee component won't know. Getting it? Just like that, if I'm changing some variable over here, how pipe component will know that variable value got changed? On the page load, we will read that data, whatever the data we stored in the session storage or local storage service. But after that, after the page load, if something value change, there is no way that we can read the data. Okay. So here comes the subject, the need of subject. Okay. So first, let's just do this dark mode and the trigger mode. How do we do it dynamic? So what I will do in app component, I will create a variable. What we'll say theme mode colon string. By default, I will say dark. Okay. Now, if this variable has a value dark, what I need to do, I will hide and show. Means at a time only one button shall be visible. Na? So at the rate if round bracket this equal to, if it is dark, we need to show normal button. And at the rate else, we will have vice versa button. Fine. Let's just check it. So currently in the variable, we have dark value. So our normal button should be visible. See, getting it? Now on click of this button, we just need to change the value vice versa, right? So click event, click change mode. Okay. Same function I will call it over here also because it's just a single variable. So we can do the vice versa, right? So in this function, what we need to do, this dot theme mode is equal to, now here, how can we do the vice versa value? What are the possible ways? It's not a Boolean value, right? So if it was a Boolean, we would have simply added the not operator. Now, how can we do the toggle thing? If in this variable we have dark, then we need to assign normal value. How we can do this? Ternary operator. Right? Ternary operator. Either you can go with if and else also, but that will be very long. So if this variable has dark value, question mark, then we will pass this, otherwise this. So here normal will be there, and here again dark will be there. So if in this variable we have dark value, so we will assign normal to this variable, otherwise it will be dark. So let's save and check. So currently it is normal mode. Once I click on it, you see dark mode, it's getting changed. Let's change the color also over here. Primary. Okay. So now thing is done. So in the app component, we are able to toggle between normal and the dark mode. Now we have to create a subject. Now, whenever we have to create a subject, and a subject we are going to create to share that data across multiple component. So always we have to create a common service and there we create the subject. When you will create the subject in common service, when you have to share that data, whenever you have to access that subject value over multiple component, so you will use the you will create the subject into some common service. So we have this user service, so we will make use of it. Okay. So now just like we have created this variable, now just like that, now we can create a subject. Okay. So let's say subject name will be current mode. Whenever we create a subject, we assign some dollar value over here. Okay, this is just a standard. Whenever we are creating a variable and in that variable we are storing subject, so we normally try to provide dollar over here. Okay, is equal to what we have to store in this variable. What we are going to have subject. So subject will come from RxJS. Okay, round bracket. What kind of data we are going to pass? String type of, because in the app component, what kind of data we have? String data, normal or that. So that's why I'm assigning the data type string. Means in this subject current mode, what type of data I'm going to store? String type of data is equal to, now I have to initialize this also. New subject string, and by default we will keep it as empty.
Okay, sorry, we don't need to initialize. So this is how you create the subject. Your subject name, colon, subject, what type of data you are going to store into this subject, string type of. We can store array, object, number, anything. Okay, is equal to new subject, string, and the round bracket. This is how you initialize the subject. Okay, so you created the subject. Now we have created our subject into user service. Now in app component also we need to integrate our user service. So constructor private user service colon user service. Okay, so we have created instance of our service into our app component. Now same kind of instance I will be creating in my pipe component also. Over here also I'm creating the same instance. Okay, so in user service I have created my subject. Then that service user service I have integrated into app component also, and app pipe component also. Now in my app component, when we are changing the value of my mode, okay, whenever I'm changing the value of my mode, I need to store the latest data into my subject. So what I will use, this dot user service dot. See, now we are able to see our subject name, current mode. Now in this subject, we have to set the data. In this subject, we have to set the data. For now, those who don't know anything about subject, just understand it's a normal variable. We use subject to store some data. And whenever we need that data anywhere else in the component, we can subscribe that data. We can read that data. Okay, those who don't know anything about subject, just a normal way of understanding, consider subject as a normal variable. We can store the data into that variable, and wherever we need that data, we can read that data also. Okay, but what kind of data we store? In the form of observable. Okay, so to store the data, we cannot directly use equal to. We have the method dot. The method will be emit. Sorry, next. Next. Okay, and in next, whatever the data you see, it is saying like what kind of data we can store, string only, because when we created the subject, we have specified the data type. So only string type of data we can pass. Okay, so whatever this variable value, we need to pass it over here. So once from the app component, once we store the, whenever we click the button, whatever the current activated mode is there, that we are storing over here. And the theme mode, we are actually passing it to be getting stored to the subject. Okay. Now, wherever you need the data stored in this in subject, you can just subscribe to it. Okay. Now in constructor, this dot user service dot, our subject name is current mode dot. See, what type of data this is emitting. Now here you can see like it's a data type is subject, but subject is nothing but observable. So whenever we have something which is returning observable type of data, so what we can do, we can subscribe to it. So dot, you can see subscribe is coming. Okay, round bracket, result colon. We know string type of data we are going to get, and instead of result, now it's not result. So mode. Okay, let's add a debugger over here. And whatever the value we get now, we will store it into a variable also. Current theme mode colon string empty. And whatever the value we get, that we will store into this local variable mode. Okay. Now see, here also we will add the debugger. Let me save all. And this variable from prime component, we will showcase it also somewhere. H1. Okay. I'll save all. Now just see it properly. Okay. It's taking time.
Now, so once I click on it, first my component function will get triggered, app component, because this button is my app component. Now in this variable, what value we have? Normal. So I'm setting this value to my subject. Okay. So once I continue this, see, now my subscribe got executed in pipe component. So whatever the value we emitted or stored or triggered into subject, that value I can get it over here, normal. And this value we are assigning it to a variable. See, normal. Again, if I change it, dark mode. See, currently in this variable dark mode, and that value we are passing to the subject. Again, my pipe will execute. Got it? So this is whatever, like currently, once we change the data, that data immediately we are able to receive it to the pipe component. So this thing is not possible with that variable stored in the service or the local storage or the session storage. So whenever it's like, if we change something in a one component, we are able to retrieve that into another component. Okay. One more thing. Now in the pipe component, I will render one more component. Let's say app ng class component I will render over here. So in my pipe component, I have rendered my ng class also. Okay. Now same data, let's say in ng class also, I need the activated mode. Okay. So I will, to read that data, again, we need to create the instance of our service. So private user service. Okay. This dot user service, or one more variation, or let me just first do the normal thing, then I will dot our subject name dot subscribe mode name colon string. Okay, let's add a debugger. Okay, I'm not storing the value, but debugger we have added. So now just see. So now in my app component, you can see at the bottom, we have got this ng class component also properly rendered. So once I click first in app component, because this button is an app component, our function get called. Once I emit the value by using this subject, you will get two debugger in two different component. First in my pipe component, we got the value. If I say continue, see, again, we got the debugger over here also. So at a time you are getting whatever the data you are emitting from your app component, everywhere you are getting that data. Understood now? Yes, sir. Because app component is separate and these components are, there is no relation, no parent child relationship is there, but still we are able to retrieve the data on the click of this button. Whatever the data we are storing into that variable, that data we are able to retrieve in another component. Got it? Sir, if we change the value also in both the components, the value will be changed. Is it correct? No, we are not changing that variable value from other component, we are just retrieving that value. Yeah, obviously we can change the value from there also. Again, it will, let's say now in ng class component, we will change the value. Okay. In ng class, at the top, we will add one more button. And I will say change mode. Okay. Class btn primary. Okay. On click of this button, I need to change the subject value. Click change mode. Okay. Let's create this function. So again, this dot user service dot current subject name dot next, whatever value you need to send. Okay. So let's say we will pass dark only. Fine. Now just see. Now we are changing the subject value from two different component. First from app component also we are changing the subject value, and then from ng class component also we are changing that value. So see, first I'm doing from app component. Once I click app component, pipe component subscribe got executed. Here we have got normal. Continue.
Then in ng class component also we got the value. Okay. Now if I click on change mode, where is that? Yeah, 28 line number. If I click on it, again I'm changing the value. Currently this subject has dark value. Now sorry, normal value. Now again I'm emitting the value dark. Okay. So see, again pipe component subscribe got executed, and again ng class component also got executed. So wherever you are subscribing, once you emit this data from the subject, wherever you are subscribing, that subscribe will execute. Clear, Dipti? Yes, sir. Okay. Got it. Anyone have any doubt? Sir, on page refresh, the value will be the same. No. Once we refresh the page, my class instance will be again initialized, Yes. right? So no value will be there. Again, everything reinitialized, no? Okay. Okay. Yeah. See, understanding subject is very important because when we work in an industrial project now, there are so many ways where we use subject. Okay. So it's very important that subject is very clear to you. Just like how you create the variable and how do you ng for ng, everything, what are the topics we have now. Just like that ng subject, behavior subject, it's very important. Why do we need to create subject? How do we set the data? Or basically, what is the scenario where we need the subject? That's very important to understand. Clear, everyone? Anyone have any doubt? Those who are seeing it for the first time, just ask. It might be anything silly doubt, but just go Sir, and ask. subject and local storage are doing same work, right? See, now I will do the same thing by using local storage. Okay, the first approach. So now in app component, instead of using this subject, I will store this theme mode data into my pipe component. Okay, sorry, local storage. So local storage dot set item current theme, and now we are not storing the data into subject. Okay, we are storing the data into local storage. Now in app component we have stored. So let's say, yeah, let's read it into pipe only. So now in pipe component, in constructor or in ng on it, we will read the data constant. What is it? Theme data is equal to local storage dot get item. What is the key? Current theme. Okay. Let's add a debugger over here. Let's save. Now just see, we are not using that subject. Now we are storing the data into local storage. Okay. Now first I'm going to the different component. Okay. Now I'm storing the data. On click of this, current mode is normal. Okay. This data we are storing into the local storage. Application, local storage. You can see. Wait, guys, just be on mute. So in the local storage, we have stored the data normal. Okay. Now that data I want to get in the pipe component. So once I navigate to the pipe component, on the ng on it, we are reading the data. Ng on it got triggered. Now we have got that data over here. Okay. Now if I change it, I stored the latest data into local storage. See how I will get to know that data now. Understood? Because how a pipe component will know like my value got changes. Understood now? Because this function ngunit is going to trigger only once. Now on the page load only we can read the data. How we can again read the data, new data, like local storage value got changed or not? How it will know? Because I'm changing the value in different component and I'm trying to read the value in different component. On the page load, we will read the data, whatever it is there. But after that, if I change the value, there is no way to read the data. Understood, Sonu now?
Sonu, understood? Yes, little bit confused. See, on the page load, we read the data. This got you. But after changing it, again we change the value. Now, how you will read the data? Latest data. Getting it now? How you will read the data now after changing it? On the page load, we got it. See, if I refresh it again I will get the latest data. Currently it is dark. Okay. I got the dark data. See in this variable. I am successfully able to read the data. Okay. No, Again I change it. From app component, I'm changing it. Now in my application, what I have? Normal. not. How your component is going to know? Like your variable local storage value got changed. Because ng on it is not going to trigger, this function is not going to trigger again. Na? Again, we need Okay, to okay, refresh. understood, understood. Understood now? Yes, Okay. because when we click on the button, that time the page is not loaded, right? Right. After It's clicking the already button, the loaded, data, na? yeah, page is Right? already loaded. Yes, Got it? got it. Everyone? So I have one Hmm. doubt. Hmm. Like after refreshing the page, it will Mhm. reinitialize. So again Subject? and again we need to, Subject, yes, na? Yeah. subject. Right. Yes. Again, So we sir, need to how do this. can we handle it? Like if at the starting of it, let's say a user has changed it to dark mode. Okay, and again he's refresh the page, then it will be See, see, normal. see. This is your app component. Okay. Once you refresh, what is the default mode? What will be the default mode? The Dark only. Na? Dark. See, in variable, I'm getting this value. So in the constructor, I will assign this value. This dot user service dot current mode dot next, and whatever the current value we have, that we will. So means once I render my app component, I'm whatever the default value we have, that we are emitting. Or this value, instead of doing it over here, we can do in service also. Basically same thing. Either you do it over here in the app component or you do it over there. Okay. In this use case, you will do like this. But there are many use cases where you don't need on the page load, you won't be setting the value. Once something value change, then you will pass it, then you will receive it like that. So many scenarios are there. But we can do this also, just to answer your question. Okay. So by obviously how you will store the data. Let's say currently you are in the dark mode, and if you refresh again is going to be resetted, right? So if you need to retain the history also, then you need to store the data into local storage or session storage, and you read it, and then you will again it assign that value into theme mode, because on the refresh all the variable are going to reinitialize na, right? This whole line, all these variables are going to reinitialize. So there is no way that your subject is going to hold the previous value. It's going to reinitialize. Okay. Okay. See, if you are saying this for the first time now, don't think too much. Consider subject as a variable, but to store that variable, to store that data into a variable, you need to use next method. And to read that data, we subscribe to it. That's it. Even if you understand this also now, that is enough. And what is the scenario where you will use this subject? Whenever we have to pass the data from one component to another, and those components are not child parent to child. If it is parent to child, we can pass the data by using input output, correct? But if you don't have any relation between components, so subject is the only way to pass the data. Clear? So in your service, this is how you create the subject. Wherever you need to store the data into the subject, by using next method, you will store. And wherever you want to read the data, like this you will do. Okay. Now one more confusion I'm creating over here. This piece of code, I will move it to a normal function, get mode. Okay. Now in this function, I have put my subscribe code. Will it work now? mm, We no, have to call that because we method in call the the function. constructor. Right? See, this thing, subscribe, we normally do it into constructor or ng on it or ng after we it. Means on the page load, this code should be registered. Then only
Once this value change, we will be able to see. Now I have put this subscribe code into get mode function, and this get mode function I'm not calling it anywhere. So this on the page load, this block is not going to be executed. Okay. So see now, even if I change now pipe subscribe thing won't work. Okay, sorry, we commented that piece of code. Let's uncomment. Okay, once I change from app component, I'm setting the data. See, ng class debugger got executed because it is in the constructor, but pipe component doesn't got executed. This subscribe because this didn't got registered now on the page load. So for do that, we need to call this function in our constructor or ng on it anywhere. By default on the page load, this function should get executed. Okay, so now you will be able to receive the data. Once I change ng class, see here also we got it in pipe component. Got it? So that's why you might have also seen like whenever we subscribe the subject, either it is in constructor, ng on it or ng after we it. Okay. So on the page load, this should execute. Then only you will, once this subject value got changed, then only this subscribe will execute. Okay. Understood everyone? Okay. So for now we have just, I have one doubt, yeah, Chetan. yeah. If suppose you multiple data is there, means that time how can you handle? Multiple data as in array, Like you you can say, just like yeah, string array or data you are object passing. something. Array also, see, Yeah, data type can be anything, na? Either we can emit string value, number, integer, boolean, array, object, any type of data you can send. Okay. Just a normal variable. When we create a variable, do we have any restriction? Any type of data we can store. Just like that subject also, any type of data you can store. Okay. Clear, okay. Rahul? It's not like Yeah, only string, number, boolean. We can store object and array also. Okay. okay. But let's say you while creating you have specified string. So in this subject you will be only able to emit the data of subject string type only. But let's say you need sometimes you might emit string, sometimes you will emit object. Then you have to make it any. Correct? Yeah, okay. Strongly typing you won't do. Okay. Any type of data you can store into the subject. No restriction. Clear everyone? Okay. So